Good afternoon. Welcome to Maths exhibition at Kendra Vidyalaya ITBP Gocher. Theme of our Maths exhibition is Maths out of waste. Here we have created several Maths topics with waste item. Good afternoon, sir. These are the graphs of trigonometric function, and here is the graph of sin x, and this is the graph of cosine x. Good afternoon, sir. My name is Vivek, and this is the graph of y is equal to sec x, and it is a graph of y is equal to cosec x. गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज आर्यन। ये 10x का ग्राफ है। यहाँ पर इसकी x एक्सिस है, y एक्सिस, इसकी डोमेन होती है रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2 और रेंज इसकी होती है रियल नंबर। गुड आफ्टरनून सर, ये कॉटेक्स का ग्राफ है। इसमें जिसकी डोमेन होती है r-n जिसमें n इक्वल टू इंटीजर्स होते हैं और रेंज होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये y इक्वल टू ex ग्राफ है। इसकी डोमेन होती है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और रेंज भी होती है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये log x का ग्राफ है। ये log x का ग्राफ है जो कुछ ऐसी तरह बना जाता है। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज सागर रावत और ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है जिसमें इसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर ही होगी और इसका ग्राफ कुछ ऐसे में बनेगा। सही, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है जिसमें डोमेन r इक्वल टू एक्स एक्सिस और रेंज 1 और +1 -1 और +1 और ये स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है जिसमें हम जो भी मतलब डोमेन -∞ टू इन्फिनिटी और रेंज 0 टू इन्फिनिटी होगी। Good afternoon, sir. This is the graph of modulus x, and its domain is all real numbers, and its range is 0 to infinity. गुड आफ्टरनून सर, I am Satyam Mitra. This is the graph of identity function. Its domain is real numbers and range is also real numbers. And this is the graph of a constant function. Its equation is f(x) equals to c. Its graph is like this, and its domain is real numbers and range is c, constant. Good afternoon, sir. This is the graph of reciprocal function. Equation of reciprocal function is y is equal to 1 upon x, and domain of x is -∞ to infinity, but not including 0. The graph would be like this, which never meets x-axis and y-axis, and x cannot be 0 because 1 upon 0 is not defined and it is defined as infinite. गुड आफ्टरनून सर, ये जो ग्राफ है ये डिस्टेंस फार्मूला का ग्राफ है। अगर हम किसी प्लेन में या फिर कहीं पे भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम इस फार्मूले से डिराइव कर सकते हैं, जो फार्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। Good afternoon, sir. So our topic is conic sections. Here are 4 applications of conic sections. First one is hyperbola. Upper side of this conic is called upper nape and lower side is called lower nape, and sides are called generators. When a plane cuts 2 generators and 2 napes simultaneously, it creates a hyperbola, and it is look like this. When a plane cuts 2 generators, it creates ellipse and it looks like this. Good afternoon, sir. This is a nape. When a plane cuts one generator of a nape, it's create a parabola. After cutting, it's look like. Good afternoon, sir. When a plane cuts 2 generator and which is perpendicular to axis, then it looks like this. Good morning, sir. So this is a conic section 2-dimensional model. Sir, this is a hyperbola which have 2 directions, 2 vertices, and sir, this is a parabola. So it's have one direction. Its standard equation is 4ax². So this is an ellipse. So this is the ellipse. Its eccentricity formula is E equal to (1 - b² upon a². Its equation is x² upon a² plus y² upon b² equal to 1. Greetings everyone. I am Ritikesh Semba and these are my teammates Anshul Khandori and Sonana. Today we are in front of you all to present Zen tiles.
Xentangles are special two-dimensional figures which appear to be three-dimensional. As you can see, here are the xentangles which are on a 2D plane, but they appear to be three-dimensional.